Namaste. Welcome to another episode of Navavimar's podcast. So today it's our second podcast on this Sunday evening, and in this evening session we're going to talk about the Trump era administration. So recently we have seen the landslide win by the Republican Party and Trump, who led this historic win for the Republican Party. And we have seen tectonic changes in the US policy with regard to US aid, State Department, and various other initiatives which were part of the previous administration. It has been piece by piece dismantled, and we have seen a lot of storms regarding the scandals and other things which have came about in the media, and also the role of Elon Musk, the billionaire businessman who had played a pivotal role in Trump winning the election. So on that front, so there are a lot of issues which have actually come up. Trump's tariff policy, uh, the border policy with Mexico, and we have also seen the illegal immigrants who entered America and how the Trump policy would deal with them. And with that in mind, there are a lot of issues also regarding H-1B visas. So the tech workers who have gone to America, and we have seen change in the laws of citizenship, how uh, citizenship is awarded to immigrants who come to America. So there has been a lot of buzz, a lot of news, a lot of controversy regarding the Trump policies, and it's been, I think, not even a month since Trump came into power. I think January he came into power officially, and it's been quite a rollercoaster ride for the media and people who watch it. So we thought let's discuss with the audience reaction. So how a common people are perceiving this. So this is not going to be an expert analysis. It's going to be a common individuals who do keep track of US, who have some idea how the US works, and they keep track of news happening with US and how it affects them in general. So we have with us Nina, we have with us Doj Leao. Okay. So these are two guests. We will have many more guests who would be coming and joining. So this is audience reaction open stream. So let me just paste the link. So if you have something to say regarding Trump era administration and also the Indian government, especially Modi 3.0, how they're going to deal and how you want them, the Modi government, to actually work with Trump or the US administration. So you can feel free to join and share your opinion. Okay. So it's open to all discussion. I have pasted the link, the StreamYard link. So feel free to come. So you will, and make sure that you have a proper mic, because without the mic working, it may not work. So hello Nina, hello Doj Bhaiya. जय श्री राम। Jai Shri Ram. नमस्कार दादा। Namaskar. Okay, so before we actually go ahead and talk about it, let me just share my screen. And for the context of the viewers who are watching, we will actually read this article. So this is an article sent by one of our guests, Dina himself. So he did the research and gave us the article and for us to read. So this is an article in the Observer Research Foundation, Navigating Trump's America. So we will read a portion of it and then we will initiate the discussion. So Navigating Trump's America, author Harsh V. Pant, Vivek Mishra. Originally published in
Feb 14th, 2025. India remains an essential anchor in the Indo-Pacific. So Indo-Pacific is very important. So Indo-Pacific is also linked to the Quad grouping. Quad grouping includes Japan, France, India. I think also Japan they have. So Quad is very important in terms of the pivot towards Asia. So we'll read. Since Donald Trump's political campaign for a second presidency gained traction, a deep sense of uncertainty has plagued Washington's relations with its allies, partners, and friends alike. This uncertainty has intensified sharply in the weeks following his inauguration on January 20th this year. Despite this flux, which now characterizes the second Donald Trump administration foreign policy. Let me increase the font so that you can also read through. Hmm. Okay, hold on. Donald Trump's foreign policy. A few pockets of certainty have emerged. The early scramble from Trump and his team suggests that Washington's approach to India may not be very disruptive. Yet, Prime Minister Narendra Modi's 2 day visit to the US early in the second Trump administration underscores the conviction that challenges remain. The Trump administration's policies haven't signaled a particularly hostile attitude towards India. In fact, Trump's meeting with Modi is only his third meeting with a head of state, which is very, very significant. I think he met Netanyahu. Uh, I remember. I'm not sure who else he met, but Netanyahu was the very first head of state he met, one of the very first head of states. The other two being Benjamin Netanyahu of Israel and Shigeru Ishiba of Japan. So he met Netanyahu and Shigeru Ishiba of Japan. The third head of state he met was Narendra Modi, PM Narendra Modi. So this is very important in terms of geopolitics, in terms of international relations, in terms of the signaling which is going from the Trump administration towards the world, that who they think are the partners and allies. As such, Washington has signaled that while it doubles down on tough tariffs and immigration policies in its neighborhood, especially Mexico, its external choices will be cautiously prioritized. Very important point this. To some extent, Trump's external compulsions have been shaped by the current state of the international order, where both Russia and China have been unwilling to take Trump's bait. On the other hand, India is differently aligned with the US in its domestic choices, deeply impacting Indian immigrants and trade. So the tariff that Trump is promising and the hard stance on H-1B visas and also on the Citizenship Change Act changes which has been made by the Trump administration, it actually adversely impacts India in many ways. The visit by an Indian Prime Minister to the US so early in a newly elected US president's term is rare and suggests at least two things. First, that the Trump administration is moving at a rapid pace to address the issues that matter to American economy. As we know that the American economy is trying to de-link its dependence on China, and the Trump and overall the American administration is trying to diversify its sources of raw material, manufactured goods and services to multiple countries because dollar is a reserve currency. So a lot of manufacturing, specifically low cost manufacturing for common goods like plastics, like toys and other things, cannot be manufactured in US uh, because of the dollar, because dollar is a reserve currency. So in terms of cost, which cost being incurred to manufacture one specific item is far more. And so there has been a concerted effort by the Trump administration to actually diversify the way they source industrial goods from various countries. It would include some part
of Southeast Asia, Vietnam, India. So there will be a pie. So there will be less dependency on China. As of now, China is the primary uh, exporter to US. Second, the comprehensive global strategic partnership between India and the US remains important in Trump's order of priorities. So this is a continuation of the previous policies. So from Bush era onwards, when the George Bush the uh, second, okay, George W. Bush became the prime minister, became the president. Since then, and that was a Republican administration. So overall, the U.S.-India relations have been quite stable, whether they were Democratic governments, whether they were Republican administrations. But overall, we have seen a good amount of cooperation, strategic partnership. We have seen the nuclear deal being signed by the Republican administration of George W. Bush. So it's a kind of a stable, continuous relationship building over a decade old time. Immigration will be at the top of the chart among the issues at hand during the bilateral Yes. meeting between India and US. In recent days, Trump's immigration policies have impacted both legal and illegal immigrants in the US. Identification of 18,000 who are living in the US illegally and deportation of 205 Indians in a military aircraft have stirred sentiments in India. The fate of an estimated over 7 lakh 700,000 illegal immigrants may be one of the key issues discussed between India and US. Okay, we will just last chapter and then we will go through the discussion. In January, the House of Judiciary Subcommittee on Immigration Integrity, Security, and Enforcement held a hearing to assess what the Trump administration can do to restore a robust defense against illegal immigration in the US. For India, it is important that the lingering uncertainty with regards to the visa status of students, working professionals, and those who have entered illegally be resolved at the earliest. By accepting deportations, India has signaled that it is a country which is ready to play by the rules. In the end, it may neither be the intent nor perhaps possible to deport all the illegal immigrants of Indian origin from the US. For Trump, the signaling is more important and that may have served its purpose. However, India should be ready for Trump's asks should the temper his stance on sending back illegal immigrants. Tariffs will be another key issue to be discussed during the Modi-Trump meet in Washington. On tariffs, Trump's biggest concern is lessening trade surplus with countries, both India and China have big trade surplus over the US. The Trump administration's decision to impose a sweeping 25% tariff on foreign steel, aluminum on the eve of the visit by the Indian Prime Minister may largely be intended for China and Mexico, but is certain to have impacts for India. Trump's tariff strategy follows broadly tripartite logic to reduce America's trade deficit, bring American companies back home, and restore US dominance on the global stage. However, economists agree that higher tariffs may not directly reduce the US trade deficit. On the contrary, they could drive up prices in related sectors such as car industry in the response to steel sanctions. There is also broad consensus that on the other two fronts, US would be better served by working with its allies rather than pressuring its own companies and foreign governments. Antagonizing friends, partners, and allies may not be the most effective approach for the Trump administration. However, this may simply be part of a carrot and stick strategy to extract concessions from other countries. For India, as a key strategic partner for the US, will be looking for possible exemptions on the tariffs even as Trump remains pivoted on China, Canada, and Mexico. Okay, we'll
stop here because there's a lot to chew over, and we also have another guest joining. So, first of all, Nina, please go ahead. And what do you think? We have read this article from ORF, and actually, we have been following a lot of the news coming from Trump's personal tweets and also Doge Department of Government Efficiency and comments by Elon Musk, the US aid uh, disclosures on the funding to various dubious organizations that we have seen. So, what do you think? What will happen in terms of this Modi government? How the Modi government is going to make sure that the Indian interests are not harmed, and we can maintain a balance where the economic and political stability of India is remains good. So I like one particular article I saw, and they had the heading that this event can probably be termed as continuity amidst change. That is like, as from India's side, we are looking to continue our relationship with the US, even though when US is changing its relationships with every other country in the world. With India, it remains stable and almost as is, except for the fact that, like you mentioned, we have some toxic aspects being removed, like the US aid. Then there's probably going to be more support for military as well, and more free market trade between India and the US. So yes, so mainly the negative aspects of the relationship are kind of fading behind, and we can say that there is going to be more dependency in terms of economy and military going ahead in the future. Yeah, I think you're talking about this article that you had sent actually. US India relations and the Yes. 2024 presidential elections continuity amidst change. Yes, okay. So now I'll give the stage to Abhay. Please go ahead. हाँ तो सुनाई दे रहा है। Yes, yes, we can hear you. Go ahead. हाँ Yes, तो go ahead. देखिए देखिए मुझे तो सबसे अच्छी बात ट्रम्प। हाँ तो मेरे मेरे विचार में सबसे अच्छी बात जो ट्रम्प की है कि वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप वाली व्यक्ति नहीं है। वो आपके घरेलू विषयों में उतना अधिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मुझे अमेरिका से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं है या ट्रम्प से नहीं है, क्योंकि वो अपने देश के लिए काम करे। तो भारत को अपना घर देखना पड़ेगा कि हम जो अपनी कर व्यवस्था है उसमें कैसे सुधार करें, या ब्यूरोक्रेसी है उसमें क्या-क्या सुधार करें। जो भी पॉलिसी चेंजेस है, ये 4-5 वर्ष बहुत अच्छा समय है भारत के लिए। यदि आप ये अवसर खो देंगे तो फिर कोई दूसरी प्रकार की सरकार आ गई तो फिर भारत के लिए आगे जाकर ये करना बहुत कठिन होगा। मेरे विचार में भारत को अपना घर समेटना है। यहाँ पर अमेरिका बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकता, मेरे विचार। Okay, fine. So we will. I have noted your points. So we will be addressing them one by one. Now to Shekhar. नमस्कार सबको। Namaste. मेरा इसमें एक ही पॉइंट है मेन, कि ट्रम्प जो है ना उसका आफ्टर इफेक्ट आएगा, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो भी ये इंस्टीट्यूशन ये तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है या डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये उससे स्ट्रांग और उसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन वापस क्रिएट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूएसएड की बात कर रहे हैं, तो यूएसएड क्या हो रहा है, वो कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में कॉम्पिटेंसी नहीं दिखा रहा था। वो हर जगह फंडिंग दे रहा था ताकि हर जगह से उसको कोई कुछ ना कुछ फायदा हो सके। पर ये क्या कर रहा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसने डिपार्टमेंट ऑफ फेथ करके नया डिपार्टमेंट बनाया, तो यूएसएड वाला ही काम होगा, पर आप उसको चैलेंज या रोक नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास स्टैब्लिशमेंट जो है ना, पहले तो यूएस स्टैब्लिशमेंट है ना वो चेंज हो गई है।
वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे शिफ्ट हो गई है रिपब्लिकन पार्टी में। तो अब जो भी फोकस होगा ना वो डिपार्टमेंट ऑफ फेथ का, जहाँ पे भी कर रहा है वो उसका फुल सपोर्ट होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि हाफ हाफ होता था, रिपब्लिकन कभी एग्री करते हैं कभी नहीं करते हैं, उससे होगा। अब ये क्या कर रहा है, स्पेशलाइज डिपार्टमेंट बनाएगा और सबको है ना कोई एक कंट्री के ऊपर छोड़ देगा। अब ये नहीं करने वाला है वो काम छोड़ने का, ये आगे जो इसके सक्सेसर्स आएंगे ना वो करेंगे। ये इसका काम है, खाली ये स्ट्रक्चर बना के जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को काउंटर करने के लिए स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि 70s या 60s में जब यूएसएड बना था, तो आपको उसी टाइम पे स्ट्रक्चर्स बनाने थे कि आप इंडिया आइडिया समथिंग कुछ इन द सेंस या इंडिया के अंदर या बाहर काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं कर रही है, अभी तक तो कोई साइन नहीं दिखे हैं इंडिया के। अब ट्रम्प का क्या है कि ये सुपरफिशियल चीजों में बहुत बात करता है, ठीक है। इसको दिखावा पसंद है। अब जैसे मान लीजिए कि इमिग्रेंट्स का ही इशू ले लो, वो नहीं, आई थिंक 1000 या 2000 से ज्यादा सेंड नहीं करने वाला वापस, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या दिखावा चाहिए अपने वोट बैंक को प्लीज करने के लिए। तो वो अगर आप दिखावा इसके साथ में करते रहोगे तो वो खुश रहेगा। यूरोपियंस जो प्रॉब्लम क्या है कि वो दिखावा भी नहीं करना चाहते और वो इसके एकदम अगेंस्ट में जा चुके हैं, क्योंकि वो पूरा यूरोपियन यूनियन पूरा एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो ही अगेंस्ट है ट्रम्प के पॉलिसी के, ठीक है। तो वहां पे वो काम नहीं करता है। इंडिया के अंदर आप कुछ आई थिंक कुछ हद तक इसको प्लीज कर सकते हो और एक कंटिन्यूटी रहेगी। और इसमें क्या है कि ट्रम्प जो होता है ना थोड़ा प्रैक्टिकली सोचता है, तो इंडिया को चाइना के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो इंडिया पे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है हमारे पास में प्लेसमेंट का। बाकी तो ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। बाकी कर बहुत कुछ सकती है। Okay, so very good. Okay, so Neener, Doj Bhai, do you have any more comments? So what I will do is I will hear your comments, okay, and commentary or any questions, and then I will try to give my point of view. But it's going to be like a conversation, a discussion that we will have. So Neener and Doj Bhai, do you have any comments or any suggestions for Shekhar on his assessment? What will happen? I agree with Shekhar that these institutions are going to be used against us in the future, not under him. So that preparation needs to be done right now, because right now he's not going to charge against us, obviously. But also at the same time, another thing I am concerned of is the dependency that we're going to create. For example, we heard the news of that we're probably going to buy F-35s from them, I think. Uh, and that, Okay, I believe, comes at the so cost of our own. okay, Yes. okay. So let's actually, because we also have a comment from the audience to discuss about F-35. Okay, okay. So F-35 is a platform. Okay, so F-35 as a platform, it is, I think, one of the few fighter jets Yes. who have a stealth capability, real tested stealth capability. Okay, so in that context, it's very important with vis-a-vis China and Pakistan, two arch rivals. Okay, so F-35 is going to give India a kind of decisive edge. Okay, maybe if not decisive, but a competitive edge over its neighbors दादा who एक are not एक friendly with एड ऑन it. करना Yeah, चाहूंगा। bolo. फॉर एग्जाम्पल ये F-35 की सिचुएशन कैसी है, मैं आपको एक एक एनेक्डोट से बताता हूँ। समझो कि आप 1400 जब यूरोपियंस आए थे 1500 में, आप एक इंडियन किंगडम हो और वो यूरोपियंस है, ठीक है। आप उनसे डील कर रहे हो किसमें, आपको आपने उनकी शिप्स देखी, उनपे कैनन्स अच्छे लगे, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, शिप्स छोड़ो कैनन खरीदते हैं, ठीक है ना। और आपके पास क्या स्टिच्ड शिप्स है, तो आप उन कैनन्स को यूज नहीं कर सकते।
आप ले लो, खरीद लो, कोई मतलब नहीं है उसका। और आपके पास शिप्स ही नहीं है जो कि इस्तेमाल कर सके वो कैनन, तो यहाँ पे वो सिचुएशन होगी। आपके पास पूरा जो लॉजिस्टिकल और सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही नहीं, ठीक है? तो आप यूज कैसे करोगे? तो आप बहुत अच्छे, मान लो कितना भी अच्छा F-35 हो, अभी अभी अभिनंदन का एक केस ले लो ना, 3 से 4 डेकेड पहला फाइटर था, और ये F-16 था पाकिस्तान के पास में, फिर भी उसको डाउन कर दिया था ना। तो यहाँ पे Mm-hmm. क्वालिटी और No, no, क्वांटिटी no, no, दोनों no, की no, 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 वो no, आती है, no, 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 और no, no, आपके no. पास क्या See, है it उसके wasn't, अंदर। it wasn't F-35. The fighter jets the India has, they do not have the real capability to actually, हाँ वो तो है। yeah. That that's why they were. See, इस if you, पर I'll tell you the, yeah. Go ahead. Abhay, go ahead. हाँ, इस पर मुझे बोलना है, इस पर अभिजीत अय्यर मित्रा सबसे अच्छा बोलते हैं कि Go एफ ahead, go ahead. 35 लेने के लिए F-35 लेने के लिए आप केवल वो विमान को नहीं ले सकते, लड़ाकू विमान को, उसके लिए आपको उसकी पूरी इकोसिस्टम की आवश्यकता है। Yeah, जैसे that's जो why I mentioned it's a एप्स platform. Yeah, hold on. आपके It's a आपके platform. हाँ, जो एप्स तो जो एप्स आपके मान लीजिए मैक या आईओएस में चल सकते हैं, वो आप विंडोज में नहीं चला सकते। तो F-35 के लिए आपको पूरा सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स चाहिए, जो आपको रेडार दे, आपको इंफॉर्मेशन दे, और फिर आप उस अनुसार उसका उपयोग कर सके। तो भारत के पास वैसा कुछ नहीं है, इसीलिए F-35 भारत के संदर्भ में अच्छा नहीं है। भारत को अपना अलग सोचना पड़ेगा। Yeah, anybody wants to reply to this? Go ahead. Okay. So on the contents of F-35, which people actually asked to discuss. So F-35 is a platform, and the challenge. Yeah, Ninar, go ahead. opinion because Ninar, you're cracking. Okay, Ninar has some technical issues. He dropped. I think he will rejoin again. So let me just give my point of view on F-35. So as Abhay mentioned, that Abhijit Iyer Mitra has mentioned in his many interviews and panels where he was a member, that F-35 is a platform. So you have to build an ecosystem. You have to build all the other parts, ancillary industries, for which it will take maybe a decade to actually have the pilots trained, have the engineers, technicians to take care of it. So it's a decade-year-old project. Okay, but I would differ from Shekhar in one point. See, the defense cooperation with America is at a very low level. Okay, but we have seen over the decades that India was able to actually maintain a healthy relationship with defense relationship with Russia, with France, and also with US. So there, yeah, there might be few adjustments made in terms of like S-400, which is bought from Russia. Okay, you have Rafales came from France. So I think with the last 10 years of Modi administration, we have seen a lot of changes. The way the defense procurement works, the way they have been streamlined, the way the technology transfer regime has been implemented. So, in my opinion, it's a difficult task to balance out Russian concerns, European concerns, but with a billion people market, okay, and fifth, fourth biggest economy, okay, and expanding middle class, okay, and the pivot towards, so now China, Asia, Russia, the Southeast Asian region itself is going to be the engine of economic growth for the next century itself. So with that in mind, I think Indian bureaucrats, the politicians, have enough knowledge and experience to actually navigate this difficult period where we will be able to manage the Russian relationship regarding defense equipment, and we will be also able to actually work with Trump, work with Russia and other countries to have the
equipment, training, and transfer technology happening over the next decade in terms of defense cooperation happening. Yes. Anybody wants to? Yeah, Neener, go ahead. Neener, you are available? Neener, you are on mute. We're not able to hear you, or else I will take the next question, which is there. Okay. People are on mute, so no issue. I'll take the next question. So let me just check. F-35 is done. Okay, this is एक question. बात मुझे बोलनी थी, बोलो यदि बोलो. आपको कोई आपत्ति ना हो। Okay, go ahead. No issue. आप कह It's रहे थे कि भारत को रूस, फ्रांस, अमेरिका सबके साथ अच्छे रक्षा संबंध रखने हैं और no, सबसे hold on. जो भी मांग है वो Hold. See, ये the thing अच्छा is, आप wait. See, I'm just stopping you here because you need to understand international relations are built on give and take. France will see what benefits it is getting out of selling equipment to India, and India will see what benefits it is getting by procuring the equipment from France. If India and France see, okay, I am getting what I wanted, France is I am getting what I wanted, they will go ahead with the relationship, the trade relationship or the relationship on different part. Same way, see, international relation is not a zero sum game. You have to understand. As that same is mentioned by AIM, Avijit Mitra, that international relationship is based on self interest. If America sees they have enough, Yes. if they see enough uh, advantage or enough being done by India to actually placate the concerns of Americans, America doesn't care whether we buy S-400 from Russia. If Trump is getting what he wants from India, they will sell F-35, and India will make sure that transfer of technology, transfer of expertise, pilot training, building of infrastructure to actually maintain the platform, upgrade spares are done. So it is about self-interest. It is not about zero-sum game. In international relationships, there are no permanent friends. There are permanent enemies. Yeah, Niner, go ahead. हाँ मतलब नहीं, मैं मेरा पूरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था। Go ahead. मैं ये कहना चाह रहा था कि रूस और अमेरिका में समस्या कहाँ आती है, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक ही से संबंध रखना है, दोनों से ही रखना है, पर आप क्या है ना कि आप रूस से कुछ हथियार लेते हैं, अमेरिका से कुछ हथियार लेते हैं। अब क्या है, नेटो का स्पेशली पूरा इकोसिस्टम है, जैसे हमने पहले भी बात, तो उनका क्या है, मान लीजिए कि आप मान लीजिए F-35 उनके नेवी के ले लेते, तो नेवी का जो वो है नौकायान या जो पोत है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं जहां आप उनके शिप से ही उनके प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने सुना है बहुत सारे डिस्कशंस में। तो वो चीज जब आप रूस से भी हथियार लेते हैं ना, तब वो कोड्स आपको नहीं दिए जाते। तो आप जब इतने लोगों से अलग अलग फ्लाइट लेते हैं, अलग अलग विमान लेते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, तो वो उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी या वो एक दूसरे से कैसे संचार करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, उसमें बाधा आती है, तो आपके फंक्शनिंग में बाधा आती है। आप देखिए भारत में 6 या 7 लड़ाकू विमान का उपयोग होता है, और सभी अन्य देशों में जो महाशक्तियां हैं वहां पे 2 से अधिक भिन्न प्रकारों के विमानों का प्रयोग नहीं होता है उनके वायुसेना में एक समय में। तो आपको वो स्केलिंग अप करना, कि आप जब बड़ी संख्या में कुछ खरीदते, जैसे 200-300 की संख्या में, तो आपके लिए उसका इंडस्ट्री बनाना, उसको स्केल करना सरल होता है। वहीं आप 18 खरीदेंगे, फिर आप और 20 खरीदेंगे, तो आप उसको स्केल अप करके या बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके उसका लाइसेंसिंग प्रोडक्शन भारत में आरंभ नहीं कर सकते।
मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। Got it. I got your point. See, in terms of, you have to see what we already have. So in terms of defense infrastructure, defense procurement, and already established platforms that you have, okay, it takes actually a decade and more to actually work, test, and then induct a military grade hardware into your into your army, air force, and navy. Okay. So you are looking at a 1 decade, 2 decade, 3 decade year old efforts to actually create a kind of synchronous ecosystem. So you have 70, I think previously it was around 80-85% was Russian origin. Few had from France, some from Ukraine, and few from America. So now I think now it is about 70%. If I may be wrong, but around 70% of equipment is now Russian. So you have to work at a gradual level, create relationships with countries, and slowly diversify your defense procurement. And at the same time, with technology transfer regime being in place, a robust regime in place with proper funding given over a long-term period, you will have to develop internal technical capabilities to actually manufacture, maintain those hardware at India itself, and also example is I think Su-35. Okay, so Su-35 is something that's the Russian origin, but Indian engineers, because they are using that plane for almost 4 or 5 decades, 3 decades minimum. So a lot of avionics that you see in Su series of planes, of fighter jets from Russia, they are actually Indian made. They are Indian innovations which have been done. So that will happen, but it will be a painful process, but it will take decades to actually integrate and maybe create 2 or 3 platforms. And maybe we don't know exactly what will happen, but this has to be navigated, because you are right. You have 1 or 2 platforms which will create an economy of scale, which will be good for the country as well. Unfortunately, we have inherited something which we cannot wish away. So you have to untangle this uh, complex web one by one. Yes, Nina. Yeah. So another concern that I found was that actually, as for use, the F-35 is pretty good and it's very capable. As you mentioned, it has stealth capabilities, all the capabilities you want, everything it has. But actually, the maintenance is very, very costly. Somewhere I read it's quite No, wait, wait, commonly discussed. wait. See, the whatever I have read in terms of F-35, so the agreement which is going to take place, okay, it it will be having like there will be facilities to actually maintain those within India. Okay, yeah, some spare avionics might come from USA, but bulk of the maintenance will be done in India. So same thing the way it is happening with Rafale. So the Rafaels दादा are being वही महंगा है imported. I'll give an दादा example. I'll give Hmm. an Hmm. example. Hmm. So, वही महंगा Hmm. है Hmm. Hmm. so the example is that the tires, the which Hmm. the F-35 uses, they can only be run 10 times before they have to be replaced. So yeah, and probably they'll not allow us to make the tires here. You have to import it each time, so that becomes an expensive affair. No, do not underestimate the Indian bureaucrats and politicians to negotiate. As as AIM, Okay, Aviz Ayar Mitra has yeah, you're Aviz kind of Ayar. hopeful on that. No. See, the thing is, as AIM has mentioned, okay, we should not be suffering from poverty of aspirations. Okay, why you think that Indian bureaucrats or Indian politicians will not be able to negotiate with Trump? Have just be just have a little bit more aspiration and think over it. Now, what's happening? Okay, see, whatever happened is in the past. It's past. Let's see how the deal is being negotiated. You will see in the news. You will see an analysis. So jumping the gun at this moment where nothing has started. See, this
2025, 26. These 2 years are going to be very crucial for Trump because after 2 years there will be midterm elections. So you will see a lot of things Right. happening in these 2 years before the midterms. So now Trump and US administration is looking for America first. Okay. Wherever the Trump sees America has an advantage, America is getting something which it deserves, it doesn't really matter whether it's a tire or something else. It is about capabilities and how we negotiate. So let's have faith in the politicians, in the bureaucrats, and see what happens. And we can always we can always ask the government in terms of, okay, this has not been done, because at least you can speak about it on media and other places. But let's have faith. Let's don't jump the gun right away. See what's happening, and then we will see what is happening. Yeah. Okay. Any more comments on this? We will go back to the question of Didi. Yeah, we can take the next question. Yeah. So the next question is from Hindu Vichadhara Show. How many reforms can we do in Bharat in timeline of Trump? Only if we have. Okay. See, there are two parts to it. One is the pace of reforms. We have seen, I think there was a show in CSK, College of Kolkata, where a professor from ISB had mentioned that for last 10 years, the real tangible reforms, whether, especially on the finance sector and also on the labor laws and other sectors, were actually stalled. It was not happening. Now, that we don't know why it happened. It's the politicians' decisions what they will do about it. But with Trump coming in and Trump making sure that the American interests are foremost in terms of economic policies which the administration will pursue, there is no option but for the Narendra Modi government to actually implement tangible reforms, because that is the only way India will be able to actually compensate and build its own economy in terms of tariffs and other things. So the reforms did not happen for last 10 years, but now reforms will have to be done as a emergency measure because there is no other alternate available. It has to be, Didi, it has to be done because there is no other option. Yeah, I hope that answers the question. We'll go to the next question. Actually, there are labor codes coming in March only, I believe. That they're issuing a new labor code bill or something in March. You will see a lot happening in Modi 3.0. It is part as planned by slow reform agenda. And second is with the Trump administration coming in and all the tariffs and other things coming in, movement of high-end manufacturing moving back to America. It's an economic compulsion from the government to actually make sure it happens. So this will take place. हाँ, पर मुझे अपने सरकारी अधिकारियों पर बहुत विश्वास है कि वो लोग कुछ ना कुछ झोल करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। No, it's a compulsion. You don't understand. See, if there are no tangible reforms been done, especially on the finance and labor part, the Indian economy economy was doing well without the reforms. Okay, for last 10 years. So there was no incentive for the politicians and the bureaucrats to do the reforms. Now it is imperative they have to do it as a fundamental economic policy. So it's like priority number 1 or 2. Okay. So you will see, just wait and see for next 6 months. You'll see what happens. Yeah, but I one doubt that I have is, will the bureaucrats want to give up control? That's the point. We have always seen that Modi wants reforms. It's not like Modi is anti-reform or the government is anti-reform. But we have seen that Modi depends a lot on bureaucrats.
And bureaucrats don't want some of the reforms because they are invested in the current system. That will always be the problem. There will always be a roadblock. If the politician's future is at stake, politicians make sure it happens. Got it? हाँ, If the I think politicians, he has to डिसएग्रीमेंट है मेरा bulldoze कि through the bureaucracy. He has to yeah, bulldoze yeah, the Shekhar, bureaucracy हाँ, in some yeah, ways. Shekhar, go ahead. Shekhar, go ahead. हम्म, हाँ, तो आपका वो इंडस्ट्री वाला पॉइंट था कि मुझे नहीं लगता वो इंडस्ट्री वापस जाएगी। ट्रम्प कितना ही ट्राई कर ले, अमेरिका की पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेशन से सस्टेन हो रही है। ठीक है, अगर आप टीएफआर उसका चार्ट देखो, अमेरिका गॉन केस है, उसका बियॉन्ड रिप्लेसमेंट आई थिंक 1.6 या 7 समथिंग कुछ है उसका टीएफआर। और अभी जो 2 के आसपास है वो भी इमिग्रेशन की वजह से है, जो बाहर से आ रहे लोग। वहां पे इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास 15-15, 16-16 पर आवर डॉलर के जॉब्स है। 1 आवर के 15 या 18 या $20 समथिंग कुछ स्टेट्स में है। तो आप वहां पे 57, मैन्युफैक्चरिंग करोगे 15, कैसे? लेबर ही 15, नहीं मिलेगा आपको। 15, लेबर 15. ही नहीं मिलेगा ना, लेबर तो इलीगल इमिग्रेंट्स है लेबर वहां पे। अब ये ट्रम्प बंद कर दिया इसने इलीगल इमिग्रेंट्स, तो हो गया काम अमेरिका का। तो वहां पे फार्म में काम करने के लिए उनके पास लोग ही नहीं है। हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक वहां रह सकती है कि आपको वहां पे पैसा मिल सकता है हाई एंड में। उसके बाद में बाकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं आने वाली, शिप बिल्डिंग नहीं जाने वाला अमेरिका के पास। वो बहुत ही लो, उसका ज्यादा पेमेंट जो सैलरी होती है बिल्डर्स की वो ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत मैनुअल लेबर लगता है। मैनुअल लेबर अमेरिकन कर नहीं सकते। उनका जो है पूरा 2 से 3 जनरेशन चला गया मैनुअल लेबर के बिना। ठीक है ना, लास्ट टाइम इन्होंने किया था जब कैनेडी था प्रेसिडेंट इनका, तब इन्होंने आखिरी बार कोल माइंस और तब चल रही थी। उसके बाद में इन्होंने छोड़ दिया है इस बाकी सब काम करना। तो मुझे नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ होने वाला है। थोड़ा सा कुछ होगा, आई थिंक ट्रेंड की थोड़ा इंक्रीज हो जाए, पर ट्रम्प के जाने के बाद में पूरा एकदम स्लोप नीचे जाएगा। Got it, got it. Okay. Anyone has any more comments? We'll go to the next question. या ये टीएफआर के विषय में जो कहा शेखर ने, इसीलिए मेरा मानना है कि भारत के पास 30-35 साल ही है विकसित होने के लिए, क्योंकि हमारा भी टीएफआर नीचे जा रहा है, तो हमारी भी वृद्धों की जनसंख्या बढ़ेगी और युवाओं की जनसंख्या घटेगी, तो हमारे पास भी बहुत अधिक श्रमिक नहीं होने वाले भविष्य में। तो जो करना अभी करो। No, okay, understood. Fine. So we'll go to the next question from Sanatani Doctor. What's the future of NRIs in USA? Seems that he's going to target even legal with racism. Also, will it address long-standing brain drain issue? Okay, 2 or 3 points on this. There is so you know the MAGA, MAGA, MAGA crowd. Okay, so the MAGA crowd is the a kind of homegrown local political pressure group which is there, which actually helped Trump to win the election. But in politics, in policy, there is no zero sum game. Okay. So in terms of Indian talent, technical talent working in US, okay, there is enough incentive to actually keep those talents where they are and maybe have more talents go and work there. It is just whatever you are seeing in terms of reactions by various groups within America, racism and other things, that is a kind of a like negotiating tactics used by countries to actually extract something from India. So if I go back to the article that I read, where Trump, President Trump has mentioned categorically that trade deficit. America has a huge trade deficit, gigantic trade deficit with China, and a significant trade deficit with India and many other countries. Okay, Vietnam and other smaller countries have a smaller one,
but India and China have a significant trade surplus with America. Now, how Trump will make sure that he will use all the tools in his arsenal, including politics, including local politics, including policy, including tariffs, to make sure that that tariff, by using tariffs, to make sure that the trade deficit goes down over a period of time, and it will go down. So, in politics and other international relations, okay, you do a lot of things not for the sake of doing it, but to get something else. So all this noise that you see is something that end of the day there will be some policy change here and there, but in practical terms it will not impact the way you think you are seeing right now. But we have to wait and watch what happens, because end of the day US economy needs high end technical talent for the high end manufacturing R&D development to take place. If you see $500 billion have been pledged by the Trump administration to actually create a ecosystem and technologies on AI, that cannot happen without Indian talent. It has to be there. So that's my answer. Yeah, anything from you, from Shekhar, Doj, and Rina? हम्म, आ, मुझे तो ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। सेम ही सिचुएशन जो युगांडा में हुआ था, ठीक है, और फिजी में जो हुआ था, सेम सिचुएशन मुझे अमेरिका में लगती है होगा, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे गन्स है उनके पास में, ठीक है, तो कुछ हद तक वो फाइट कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म में इंडियंस का क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पावर नहीं होती है पर मनी बहुत होता है, ठीक है, और वो होते हैं ना, वो नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे एक ह्यूमिलिटी होती है, ह्यूमिलिटी नहीं होती यहाँ पे। एक सप्रेशन होता है कि आप अपने आप को सप्रेस करते हो ताकि आंखों में ना हो दूसरों के। इंडियन कम्युनिटी में क्या है, उल्टा होता है, उनको दिखना है हर जगह कि मैं हूं, ठीक है, तो ये लोग पोजीशन ऑफ सुपरफिशियल पावर में जाते हैं, ठीक है, रियल पावर में नहीं जाते कभी भी। ये सुपरफिशियल पावर जैसे गवर्नर्स है, या नहीं गवर्नर्स नहीं, सेनेटर्स है, सुपरफिशियल पावर, उनके पास कोई रियलिटी में ग्राउंड पे कुछ करने की कोई पावर नहीं उनके पास में, ठीक है, तो वहां जाएंगे और नौटंकी करेंगे। पर यहाँ पे अमेरिका में जो रियल पावर है वो गन्स है, ठीक है, आप पुलिस वुलिस कितना भी कर लो, पर आपके पास अगर गन है तो पुलिस आपका घर के अंदर आ नहीं सकती, ठीक है ना। तो वो अगर उनके पास है तो आई थिंक वो सरवाइव करेंगे। अगर नहीं है, और जो नौटंकी उन्होंने दूसरे कंट्रीज में की है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बाद में भी वो सुधरे नहीं है, तो सेम चीज वहां पे दोहराई जाएगी और फिर से उनको निकालेंगे और वहां से भाग के आएंगे, कहीं और भागेंगे, और क्या। Yeah, but देखिए okay. Yeah, go ahead. Go ahead, Abhay. हाँ, तो मेरे लिए जो भारतीय अमेरिकी लोग हैं उनका उनके साथ जो समस्या है, देखिए ट्रम्प का जैसा मैंने समझा है जितना भी, वो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेशन के विरुद्ध बात करते हैं, अवैध प्रवासी। उन्होंने ज्यादा H1B के विषय में बात नहीं की है। ये कुछ रिपब्लिकन समर्थकों में एक गुट है जिन्होंने भारतीयों को लक्ष्य बनाया है, क्योंकि वो लोग उच्च पद में हैं या ट्रम्प उन्हें ले रहे थे अपने सरकार में या अपने प्रशासन में, तो कुछ लोगों को चिढ़ मची कि इतने भारतीय और हिंदू लोग कहाँ से आ गए। दूसरी बात दादा जो एक भारतीय एक पॉइंट अमेरिकी ऐड करूंगा। भार हाँ बोलिए। हाँ, Wait, wait, ट्रम्प जो wait, है wait, वो wait. रिपब्लिकन नहीं है। Shekhar, हाँ, Shekhar, Shekhar. ट्रम्प रिपब्लिकन नहीं Let है। जो let रेसिस्ट है ना, Abhay. सारे रिपब्लिकन है। Okay, wait. Abhay, finish your comment and then Shekhar, you can reply. Abhay, go ahead. हाँ, और भारतीय अमेरिकियों के साथ जो बहुत बड़ी समस्या रही है वो केवल बंदूकों की बात नहीं है। बंदूक का तो विषय है ही, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक रहे हैं भारतीय अमेरिकी लोग, तो आप तो गन विरोधी या शस्त्र विरोधी है ही। वो एक बिंदु तो है ही। दूसरा बिंदु है कि आपने कभी भी अमेरिकी राजनीति में कभी भी अपनी भागीदारी नहीं दी। आपने कभी भी अपने हितों के लिए अपनी लॉबीज नहीं बनाई, उनके नेताओं पर दबाव नहीं डाला, आपने हिंदू हित की बात नहीं की, अपने भारत हित की बात नहीं की। आप यहूदियों को देखें, वो कैसे अपना काम निकालते। यहूदियों में भी अधिकांश डेमोक्रेट ही है, पर उनको पता है किसको कितना बोलना है।
किसको कहाँ से पिन मारना है, वो चीज भारतीयों में नहीं है, वो विकसित ही नहीं किया भारतीयों ने या हिंदुओं ने। अब जाकर थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आने लगा है, क्योंकि भारतीय लोग दोनों ओर से लक्ष्य बन रहे हैं। वो रिपब्लिकन रेसिस्ट की ओर से भी लक्ष्य बनते हैं, डेमोक्रेट में जो वो कास्ट कास्ट चिल्ला रहे उनके ओर से भी लक्ष्य बन रहे हैं। तो अब वहां के हिंदू लोग फंसे हुए हैं, तो क्या करें? तो वो देख रहे हैं कि अभी रिपब्लिकन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनको बस मेधा दिखती है या योग्यता के आधार पर आपको अवसर देते हैं, और भारतीय लोग इसमें सबसे आगे है योग्यता में। तो वो थोड़ा सा रिपब्लिकन की ओर जा रहे हैं, रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में उनको थोड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है। अब इसी का प्रयोग करना है अपने हितों को साधने के लिए। अब हम जो मानते हैं, जैसे कैश पटेल, वो जय श्री कृष्ण बोलते हैं या अपने माता पिता के पैर छूते हैं, वो सब बहुत बढ़िया है। आप उनके माध्यम से, जो वहां के हिंदू अमेरिकी लोग हैं, वो अपना काम कैसे निकालेंगे? आपने कितनी संस्थाएं बनाई हैं जो वहां के सेनेटर्स पर, वहां के कांग्रेसमैन पर दबाव डालेगी आपके हित में निर्णय लेने में या आपके नीतियों को लागू करने में? ये देखने की बात है। बंदूक तो धरातल पर लड़ने की बात है, वो उससे बहुत आपका लंबा समय तक नहीं चलेगा। जब तक आप संस्थाएं नहीं बनाएंगे जैसे यहूदियों ने बनाई, तब तक कुछ नहीं होने वाला, मेरे विचार। Yeah, we also have संस्था वो बना भी नहीं सकते। we also have रुको, Rishi with us. Rishi, संस्था वो बना नहीं you want to सकते। speak? मैं बोल रहा हूँ? Yeah, go ahead, Shikhar, go ahead. दादा, हाँ, मैं yes, खत्म go करता हूँ ahead. जल्दी। हाँ, करो। तो ये संस्था बना नहीं सकते क्योंकि ये इडियट्स जो थे ना, जब तक 70s से ये लोग अभी तक सो रहे थे। इनके नाम पे, हिंदुओं के नाम पे पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स ने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और ये सब। तो इनको गवर्नमेंट भी फाइट करनी है, इनको जो एग्जिस्टिंग फेक ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी फाइट करना है। ये इनको अब तक ये लोग ब्रेन डेड थे, ठीक है। अचानक से दिमाग में बुद्धि आ गई इनके, और बुद्धि आने से कुछ होगा नहीं अभी, ठीक है। ये इनको 100 साल लगेंगे वो सिस्टम को अंदर से समझने में। और एक कैश पटेल भी ऊपर जाने से होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या बोलते हैं, एक तरह से आपकी यूनिटी है ना, उसको तोड़ दिया जाता है। आप छोटे छोटे गुटों में, जैसे मान लो कि कुछ गुजराती है वो घूमते साथ में, ठीक है, कुछ मारवाड़ी घूमते साथ में, कुछ मराठी साथ में घूमते हैं। सबके सब इडियट्स हैं, सबको पता है कि भाई आप इंडियंस नहीं हो पहले, वहां पे आप पहले हिंदू हो फिर इंडियंस हो, ठीक है ना। वो समझते नहीं है। अमेरिकन जो है ना, वो नेशनलिटी पे बाद में जाते हैं, रिलीजन पे पहले जाते हैं। और गन्स की बात है कि अमेरिकन में पुलिस और वो सब ऑर्गेनाइजेशन बाद में काम करेगी, सबसे पहले आके आपको गोली मारा जाएगा। तो गन सबसे पहले लाओ, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ठीक है ना। सेल्फ डिफेंस पहले, सबसे पहले होना चाहिए। ट्रम्प के केस में प्रॉब्लम क्या है, रिपब्लिकन पार्टी है वो ऑलवेज रेसिस्ट थी, तो अभी भी रेसिस्ट है, कोई वो नहीं है, अभी वो मुंह छुपा के थोड़े से बैठे हुए हैं। ट्रम्प है वो रिपब्लिकन नहीं है, ना ही उसके कोई भी कैबिनेट वाले है, सारे के सारे लेफ्टिस्ट थे जो कि छोड़ के आए हैं लेफ्ट को, ठीक है ना। तो ये अभी जैसे ही ये लोग हट जाएंगे यहाँ से, तो वो लोग, ये जो नॉर्मल रिपब्लिकन्स है ना, जो उनका रेसिस्ट बिहेवियर है, वो वापस आने चालू हो जाएगा। ये प्रमोट करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो वहां पे है। Yes, thank you, Shekhar. We also have now, I will give the platform to Rishi and Hindu Vichardhara Madam. So, Rishi, you go first and then to Hindu Vichardhara Madam. नमस्ते सभी को। पता नहीं ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, मैं किसी और विषय पे था, अभी सुन रहा था, तो आई विल स्पीक अ बिट लेटर, सो लेट अदर्स स्पीक so that I can gather some information. Didi, please go ahead if you have something to say. मैं अभी ये रिसेंट जो शेखर ने बात की उस पे आई हूँ। वेरी गुड शेखर, एटलीस्ट कोई तो है जो ये बोलता है। मतलब मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ। अमेरिका को तो छोड़ो, इंडिया में जहाँ पे हमारा देश है, हम यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाए अभी तक। बस हम लोगों को आउटरीच करनी आती है बिना सर पैर की बातों पे। एक्चुअल इश्यूज पे हम
कोई काम नहीं करते हैं, कोई मतलब उसमें फोकस नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अमेरिका के अंदर जो हिंदू है एटलीस्ट वो कुछ करने लग गए हैं। जैसे HAF करके, कोहना करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्होंने बनाई है, जो अच्छा काम कर रही है। बहुत काम करना पड़ेगा लेकिन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिंदूज जो है ना, वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह से ज्यूज करते हैं। और ये हमें सीखना पड़ेगा। जब तक हम इन ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका नैरेटिव कोई नहीं सुनेगा। गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट के ऊपर हम हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। बीजेपी अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पावर में आना है। वो आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। आपको अपना, ठीक है बीजेपी की तरफ हम अलाइंड है, उसको वोट देते हैं, बीजेपी वोटर हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करनी पड़ेगी, जो कि जिनको जवाब देना आता हो। नॉट आरएसएस टाइप, जिनको जवाब भी नहीं देना आता। आरएसएस के ऊपर कितने लोग क्या क्या बोल जाते हैं, वो जाके डिफेमेशन केस भी नहीं करते हैं। तो जब तक आप हमारे यहाँ से ऐसी जो हमारी हिंदू एलीट है ना, जब तक वो नहीं उठेगी, तब तक एक मैसेज नहीं जाएगा कॉमन लोगों के पास कि हमको भी आवाज उठानी है अपने लिए। तो बस मैं शेखर की बात जो है उसके ऊपर ही कहने आई थी। ब्रिलियंट पॉइंट, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदूज की, कि हम सुपरफिशियल जो पावर है ना उसमें पड़े रहते हैं, कि हमारे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हो गए, हमारे सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने रीट्वीट आ रहे हैं, हमारे ट्वीट कितना वायरल हो गया, हमारे मीम्स कितने वायरल हो गए। बस इन चीजों में लगे पड़े हैं। एक्चुअल जो काम है उसमें हम फोकस ही नहीं करते। दीदी एक पॉइंट आया है साथ डॉक्टर जी का, उन्होंने कहा है कि इट्स बिकॉज हिंदूज आर बिजियर विद प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल स्टफ एंड करियर ग्रोथ। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि आप अपने घर के आसपास जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट को के अंदर देखो, किसी थिएटर के अंदर जाओ, किसी पब के अंदर जाओ, आपको हिंदू भरे पड़े मिलेंगे। चाय की टपरी भी। हाँ, और आप उसको छोड़ो, आप YouTube पे कोई भी चैनल खोल लो, कोई एरा गैरा एक्स मुस्लिम का चैनल खोल लो, कोई एरा गैरा मतलब इवन न्यूज के नीचे जो चैट होती है, न्यूज के नीचे जो चैट होते हैं, कई बार डिबेट्स हो रही होती है, बहुत रेयर देखती हूँ मैं डिबेट्स, लेकिन कई बार देखती हूँ। वहां पे आप चले जाओ, चैट के अंदर ये सब बैठे बेकैती कर रहे होते हैं। कौन सा भाई करियर बना रहे हो, कौन सा तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो दिख नहीं रहा है कुछ, मुझे तो तुम बेले ही घूमते दिखते हो। फ्री बिजली फ्री पानी के लिए तुम वोट करते हो, तुमको कोई मतलब तुम क्या बोल रहे हो, इवन मैं भी इंक्लूडेड हूँ। हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे सोसाइटी के बच्चों के साथ क्या। हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के FIR कराने में हम जरूर एक आधे केस में करा देते हैं भाई। ये वो भी बहाना बेकार है केस ना, है। जो कि हम करियर बना रहे हैं और ये कर रहे हैं। भाई तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको तुमने पैसा देना है, और कई बार होता है कि एक हफ्ते में एक आधा घंटा देना है, मतलब एक आधा घंटा ही आप वहां पे रहोगे ना, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं, किस चीज पे हमें क्या काम करनी है। कोई बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ और मैंने काम किया है। ये मैं एनजीओ के साथ जुड़ के काम किया है, और मैंने जॉब भी की है, अपने बच्चे भी देखे हैं, और एनजीओ के साथ भी काम किया। अब मैं ग्राउंड पे उतना काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं अब वो ही टाइम जो मैं एनजीओ के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेंड करती थी, वो मैं यूट्यूब पे अपना टाइम लगा रही हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ 2 बच्चों के साथ और घर के साथ और ऑफिस के साथ, मैं इतना टाइम दे सकती हूँ, तो ये बहाने पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि हम जी अपना करियर बना रहे हैं, हम प्रोफेशनल ग्रोथ।
तो भाई फिर प्रोफेशनल ग्रोथ देखते रहो तुम। पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, युगांडा में क्या हुआ था। फिर विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो, फिर कहो ना कि हम भाई हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, हमें मारना है मारो, जो भी करना है हमारे साथ कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। कोई एक किताब, मैं आपको ना दादा मैं आपको बोल रही हूँ, किसी दिन ना आप स्ट्रीम करना और बोलना कि जितने भी हिंदू है ना मेरे सब्सक्राइबर, वो आके बताएं कि उन्होंने लाइफ में कितनी किताबें पढ़ी है। मैं आपको बता रही हूँ, गिन के चार पांच हिंदुओं को छोड़ के आपको नहीं मिलेगा कोई। और ये मैं बोल रही हूँ जिसके जिसका बुक रीडिंग चैनल है और मेरे मेजर सब्सक्राइबर हिंदूज हैं। मैं उनसे भी किसी दिन पूछ लूंगी ना कितनी किताबें पढ़ी है उन्होंने लाइफ में, वो भी नहीं बता पाएंगे। परपेचुअल इडियसी है हमारे पास, क्या करें। Dada, you're muted. Yeah. Okay. Yeah. So, Didi, I'll add 2 more points to this. Maybe it's a byproduct or after effect of secular Marxist influence education policy, which removed the Swayambodh and Shatrubodh from the large population which grew up from 50s onwards. So that could be the one reason, but I would say right now categorically. आई डिसएग्री। Okay, please go ahead. Please go ahead. हाँ, बोलिए. क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोग ना ये मार्क्सिस्ट एजुकेशन को बहुत ज्यादा ही ब्लेम करते हैं। हिंदूज की प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चों को जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते हैं। जो पेरेंट्स है ना वो बच्चों के दिमाग में उन्होंने फेलियर को लेकर इतना डर बिठा दिया हुआ है ना कि तुम फेल हो जाओगे, तुम जो दुनिया में चल रहा है वही करो। मतलब जब तक आप बच्चे को बच्चा बाहर नहीं जाएगा, बाहर लोगों के साथ मतलब घुलेगा मिलेगा नहीं, वही एक 9 to 5 जॉब करके घर में आके बैठ के कभी कभार हो गया कि कहीं पे वो चला गया कि अपने दोस्तों के साथ क्लब या थिएटर या कहीं पे भी, आप मंदिर नहीं भेजोगे। और हमारे मंदिरों में भी जो है वो सीरियस इश्यूज डिस्कस ही नहीं होते हैं। मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, लेकिन स्टिल मतलब वो तो बेचारे अपना मंदिर चला लेते हैं, वही बहुत है। लेकिन आई थिंक ये पेरेंट्स को भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि मार्क्सिस्ट एजुकेशन मतलब, तो इसका मतलब जो पेरेंट्स है वो स्कूल के अलावा या कॉलेज के अलावा अपने घरों में कोई बुक्स ही नहीं रखते हैं। यही मतलब हुआ ना कि हिंदू पेरेंट्स जो है वो अपने घरों में किताबें नहीं रखते हैं, रीडिंग कल्चर नहीं है हमारा। तभी इस तो पर हम मेरे कुछ विचार है। सॉरी, नए आइडिया से हमारा एक्सपोजर नहीं होता है। Yes, Didi. और Yeah, Abhay. इस पर मेरे कुछ विचार है। हिंदू सोसाइटी में एक, अरे हाँ मैं लास्ट पॉइंट बोल रही हूँ। और हमारी हिंदू सोसाइटी में जो है वो आप बीच बीच में रुक रही हैं। ओके No, Abhay, wait. Let Didi. Didi, हाँ, complete ओके, आई एम वेटिंग। complete. ओके। जो है, जो हिंदू सोसाइटी है, हमारे जो बच्चे हैं हम उनको क्रिटिकली क्वेश्चन करना भी नहीं सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम उनको क्वेश्चन करना सिखाएंगे ना तो हमें ये होता है कि ये क्वेश्चन ना करने लग जाएं। और ये मैं जेन्युइनली देखती हूँ अपने आसपास, मुझे तो मतलब बड़ी ही हैरानी होती है कि हम अपने बच्चों को क्वेश्चनिंग करनी नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम हिंदू बच्चों को क्वेश्चनिंग करनी सिखाएंगे ना तो वो हर चीज को क्वेश्चन करेंगे, और जब वो हर चीज को क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप इन चीजों से ना समझ जाएंगे इन चीजों को। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, एटलीस्ट जो यहाँ पे पैनल में बैठे हैं, मुझे पक्का पता है कि हम जितने भी लोग बोल रहे हैं आज सोशल मीडिया पे, जो एक्चुअल एकेडमिकली बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने या हमारी फैमिली में कोई ना कोई था जिसने हमें सिखाया क्वेश्चन करना।
तो अगर हम अपने बच्चों को क्वेश्चन करना नहीं सिखाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चनिंग करना पेरेंट्स सिखाते हैं ना, तो बच्चा सीखता है। तो हमेशा स्कूल को ना और ये मार्क्सिस्ट एजुकेशन को सिर्फ ब्लेम करके हम नहीं बच सकते हैं। Yes. Yeah, Abhay, go ahead with your हाँ, comment. इस पे मेरे विचार है। ये केवल स्कूल और मार्क्सिस्ट एजुकेशन की बात नहीं है। आप देखिए पूरे हिंदू समाज को कैसे तोड़ा गया है। आपके मंदिर छीने गए, आपके मंदिर से जुड़े हुए शैक्षणिक संस्थान छीने गए, आपके मंदिर से जुड़े हुए आपकी ललित कलाएं थी, जैसे नृत्य, संगीत, शास्त्रीय संगीत, सब कुछ मंदिरों से ही चलता था। वो पूरी व्यवस्था तोड़ी गई है। आपको धीरे-धीरे व्यक्तिगत जीवन में भी आपके संस्कृति से दूर किया गया और आपकी शिक्षा व्यवस्था ने भी आपके मन में डाल दिया कि आपकी संस्कृति तो रूढ़िवादी है, इसको छोड़ो और अंग्रेजी संस्कृति अपनाओ। तो ये बहुत वृहद स्तर पर किया गया है। ये किसी एक विषय को आप दोष देकर इससे मुक्त नहीं हो सकते। तीसरी बात, जो हिंदू माता-पिता आप कहते हैं कि वो लोग सोचने की स्वतंत्रता नहीं देते थे। पहली बात तो जो हिंदू माता-पिता है, उनको अपने धार्मिक स्कूलों से कोई लाभ नहीं मिलता था। मुसलमानों में क्या होता है, अपने बच्चों को मदरसा भेज देते हैं वो लोग, और उन लोगों को अच्छा मेरा बेटा कमाए या बेटी कमाए, उनको उससे कोई लेना-देना नहीं है। उनको वो लोग पूरा जीवन सड़क पर बिता देंगे, उन लोग का ऐसा है। हिंदू माता-पिता वैसे नहीं है। हिंदू माता-पिता चाहते हैं कि जो कष्ट हमने सहे हैं जीवन में आर्थिक कारणों से, वो मेरा बच्चा ना सहे। तो मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा पूरा ध्यान पढ़ाई-लिखाई में दे, जिससे वो कमा सके। फिर वो बोलते हैं कि अरे यार, ये अपने महाभारत, रामायण कौन सिखाने जाए, इसके पढ़ाई तथा में बाधा आएगी, उसको छोड़ दो। हाँ, तो ये सारी सुनो, मानसिकता आती है। और क्यों बच्चों को अधिक हेलो, सोचने का अवसर नहीं देते, मैं बताता हूँ। क्योंकि उस समय अवसर भी सुनो, उतने सुनो, थे नहीं कि मैं वो आर्थिक रूप से अधिक Shekhar, अवसर नहीं थे। wait, आप let Abhay finish. Yeah, Abhay, go ahead, you finish it. उस समय हाँ, जल्दी करो दादा, अभी 1990 से यूएस में पहले, थे हम लोग हाँ, यूएस पे मैं अभी डिस्कस कर अपना रहे थे। बात पूरा No, no, ये let's सारी let it finish. No, समस्याएं no problem. सुलझाने के लिए अभी ही समय है, जब अमेरिका में ट्रम्प है। मैं वही बता रहा हूँ। तो Yeah, Sheikh. 1990 तक हमारे पास आर्थिक संभावनाएं नहीं थी। या तो सीए करो या तो इंजीनियरिंग करो, तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते। नहीं तो फिर आप जीवन में बहुत अधिक आपके पास अवसर नहीं थे कि आप एक्सप्लोर कर सको। ये बोलना आसान है कि एक्सप्लोर करने नहीं देते थे, पर उस समय एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास कितने अवसर थे। माता-पिता करते क्या अपने बच्चे को, ये नहीं बोल के कि पढ़ लो बेटा, तभी तुम अच्छे से कमा पाओ। तो माता-पिता को दोष देना बहुत सरल है, पर हमारे एलीट्स ने और हमारे गवर्नमेंट ने जैसे हिंदू समाज के ऊपर नियंत्रण कर के उसको तोड़ा है, उसी पर प्रहार अब हिंदुओं को वापस से करना पड़ेगा। ये मेरा मन। Yeah, Shekhar, go ahead. And next, Didi. देखो, वो सब ठीक है दादा, कंटिन्यू करो। अमेरिका पे डिस्कशन कर रहे थे ना हम लोग, मैं उसका बोल रहा था। अरे अब नहीं ऑफ ठीक टॉपिक चले नहीं गए। ठीक no no actually no 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 this is not off topic. Let me just see when we are talking about that how India is going to respond to American policy, whether it's foreign policy, whether it is economic policy, tariffs on immigration. Institutions, Americans constitute a very significant part of the middle class, American middle class. And now American Indian middle class doesn't have the kind of institutions which Jews have and had, and they currently have, in terms of lobbying power, political power, able to influence politicians' policy. So, on that context, the lack of institutions, which is being discussed right now, is very relevant. That why we do not have the kind of clout which the Jewish lobby has, and Indian lobby does have a clout, but it is not as good as Jews have. So this is a symptom of a very age-old problem that we Hindus have. I think it's very relevant in terms of how do we deal with it. Shekhar, go ahead. दादा, उसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप दीदी जो बोल रहे थे ना, वो इंडिया के केस में बराबर है, ठीक है।
कि ये मार्क्सिस्ट वाला पॉइंट है, वो इंडिया पे आप लागू नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी 1000 ईयर्स से ये हो रहा है, ये कोई 50 से नहीं हो रहा है, ठीक है। पर आपका पॉइंट अमेरिका में सही है क्योंकि ये जो गए थे ना सब अमेरिका में, जब ये तब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ के ही गए थे, तो ये वहां उनका जो बिहेवियर है वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है, पर इंडियंस का नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे जो पढ़ के गए थे सारे अपर कास्ट और क्या बोलते हैं, एक तरह से अमीर लोग गए थे, ठीक है ना। मिडिल क्लास तो जा ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो ये सब वो उसी मार्क्सिस्ट खिचड़ी में पक के गए हैं, तो इनको कुछ पढ़ा नहीं था, सेक्युलरिज्म का बुखार चढ़ा हुआ था, तो बस अब देखो बुखार उतर रहा है धीमे धीमे। Last word to Daisy, then we'll move out to we'll go back to our core discussion. नहीं, आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया। अगर कुछ और होगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू दीदी। Okay, so now let me go back to the chat and let me see. We had one more question. Okay, this is again a question and a comment by Didi. I am hearing and reading about Europe having their own military in the future after the recent GD1 speech in Germany and Trump's stance in the Ukraine issue. What's your take? Okay. There might be a breakup in NATO. NATO might not survive. I think if there are consecutive two Republican like this current Republican admin and another one in another 4 years, 8 years, then we might see significant drop in funding for the NATO and its troops and military presence, and that will be a very big pressure on the Europeans to actually fund those. Unfortunately, Europe is a waning economic power, a waning technological power, and waning military power. So I do not see in even midterm, let's say in 10 to 20 years, Europe having its like a EU military service coming in. Even if it comes out, it will not have the technology, it will not have the financial and other industrial base. For a military to build a professional military, you need industrial base, you need a strong economy, and you need technology. Europe for last 20 years have been lagging behind in both of these due to their policies of socialism. So they might have it, but it might not rival America or China in many aspects. They might have a military, but it will not be as powerful or as efficient as you have US and China. Yeah. Anybody has any comments on this specific topic? Okay. So silent. So I we'll think that मैं बोलना चाहूंगा। go ahead, Shekhar. हाँ, निन्नर बोल लो। so I मैं think बोलूं, that ठीक है। US is basically taking हाँ its बोलो। hands off. Okay. First Ninar, then Shekhar. Can you hear me? Yes, we can. Ninar, go ahead. You will speak, and then Shekhar will speak. Okay. So I think that US stance is here is they're basically taking their hands off the Atlantic Ocean and they're going to focus on Indo-Pacific, basically. That's why all the shift and focus towards Middle East, towards India, towards you can say Taiwan, Japan, that side, East Asia and all that. And Europe is not going to be a battleground for them that they want to invest in anymore because I think they're not a growing market. They're not producing anything of much of value as well. No raw materials, and their manufacturing is declining. So they've probably decided that they'll make peace with Russia and focus on the rest of the world. I have a small question on this. Just one question. Uh,
don't you think that America will actually cannot give up on Europe because America draws its cultural validation from Europe? Most of the American crowd is white Europeans, so they have some affinity towards Europe, cultural No, I affinity. disagree. I don't I think disagree. they American can give up on Europe that easily. No, I think the now US has become an entity of its own. It does not really look to Europe, and I think it actually looks at itself as a superior of Europe, right? It has nothing. Europe has little to offer America at this point. Even with the heritage considered, probably you could say that they also have the other way, right? Because they fought their war of independence with Britain and got independent from them. So that negative aspect is also there. And they fought two world wars with Germany and so on, right? So it's not entirely positive from the beginning. Yeah, Shekhar, but you can I speak. believe those are not cultural issues. Those are those are political issues. But America does seek cultural validation from Europe. I feel so because French wine, French accent is sexy, kind of a thing. They do seek cultural validation from Europe in many ways. This is just what I feel. Maybe I'm wrong. Maybe you are right. It's just what I think. It's just that I think that in the present time, say like maybe 100 years back, there would be leaders and there would be many, say like you could say artists, philosophers, scientists, everything. Europe had a lot of things going on. Now you can barely name scientists, philosophers, or anything coming out of Europe. Nothing much is there here. So in that way, I think the cultural inspiration part is probably going to shift elsewhere. Even though they might connect with their roots here, I think. But now I think US itself is not going to be white majority in the coming years. Their demographics are changing and all that, right? Uh, let's see. I am not sure about it. Maybe the demography will change and the leading demography will seek validation from their own or culture of origin. You Yes, never know. they'll mostly be mixed in the future, probably. शेखर तो कुछ Shekhar, बोलने वाला था ना? Shekhar, yeah, Shekhar. हाँ, तो ये जो अमेरिका का और इसका जो डिस डी एंटेंगलमेंट है वो होना ही था, इनएविटेबल था, क्योंकि यूरोप है ना बेसिकली एकदम लेजी हो गया है, ठीक है? उसके पास कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है? और कुछ वैल्यू भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है, उसके पास कल्चरल वैल्यू नहीं है, उसके पास मिलिटरी अब देखो, आप कितना ही एडवांस हो जाओ, आप क्वालिटी जो है वो इनएविटेबल है कि वो क्वांटिटी से हारेगी, ठीक है? आप कितना ही क्वालिटी कर लो, पर अब अमेरिका क्वालिटी कर सकता है क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन और रिसोर्सेज सस्टेन करने के लिए। जर्मनी, फ्रांस और कोई भी यूरोपियन नेशन है, आज अगर इंडिया का भले कम से कम 50 साल पीछे हो टेक में उनसे, फिर भी वो नहीं जीत सकते, ठीक है ना? तो उनके पास मिलिटरी कुछ है ही नहीं, आप ऐसा समझो। जो है उनके पास में वो थोड़े बहुत न्यूक्स है जिनसे लोग डरते हैं, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। वो कॉलोनियल हैंगओवर उनका उतरा नहीं है, ठीक है? वो उसी हैंगओवर में जी रहे हैं और उनको जो आज क्या बोलते हैं, जो पावर मिल रहा है ना, जो भी मतलब डिप्लोमेटिक बोलो, मिलिटरी बोलो, सब अमेरिका से मिल रहा है। अमेरिका ने इनको बैक करना बंद कर दिया ना, तो अफ्रीकन्स भी नहीं सुनेंगे इनकी, इतना बेहाल है ये लोग, ठीक है? इनका जो इनकी जो क्या बोलते हैं मेंटेलिटी थी ना, जो कॉलोनियल एरा में अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो गई नहीं है इनकी सोसाइटी से। ये अभी भी समझते हैं कि ये सुपीरियर है, ठीक है ना? तो ये जब जाएगी ना तब इनको पता चलेगा कि ये है कहाँ पे। आजकल तो यूरोप का ओपिनियन कोई सुनता भी नहीं है कि यूरोप क्या है, इतना हाल बेहाल है। सब अमेरिका के कहने पे होता है क्योंकि वो आज वर्ल्ड पावर है। यूरोप आज कोई भी इंडेक्स में देख लो, प्रोपेगेंडा के अलावा उनके पास है क्या? ठीक है, जो अपने सोसाइटी को प्रोपेगेंडाइज कर ले,
उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ये इनएविटेबल है, ये डिक्लाइन में सोसाइटी है। आई थिंक सेंचुरी हो गया इसको डिक्लाइन में चल रही है, इसके डिक्लाइन ही खत्म नहीं And हो रही। to bolster Shekhar's argument, maybe all of you can comment on this. Okay, So okay, I wait, was last wait. night. Yeah, Shekhar, Rishi, go ahead, and then Abhay. Rishi, go ahead, and then Yeah. Abhay will speak. Yeah. Okay. So last night I was checking. I was looking at Owen Jones, the Marxist loony of Britain. So even he was commenting on this apparent decline of the West and fall of the West. So it was like very funny for me to notice this because he gains all his earnings by doing Palestinian videos. Least does he care about Europe, but it seems now even he has started to at least gauge this fact that Europe is falling. So it was something exciting for me to see that started with Douglas Murray, the conservative now, with his strange Death of Europe book. And right now, even the lefty loonies even are accepting this after J.D. Vance's scathing speech at Munich. Okay, Abhay, go ahead. तो मैं दीदी के कुछ बात का उत्तर दे दूं कि ठीक है, अमेरिका के पास अपना कल्चर है, पर वो ग्रेको रोमन वैल्यूज, प्रोटेस्टेंट वैल्यूज उसने यूरोप से भी अडॉप्ट किए हैं। प्लस इंडिया का भी अपना कल्चर है, बट वी लुक अप टू द वेस्ट फॉर वैलिडेशन। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका डजंट लुक अप टू यूरोप फॉर कल्चरल वैलिडेशन, पर ये बात भी सही है कि यूरोप का डिक्लाइन आ रहा है। तो अमेरिका में भी हो सकता है कि आप देखेंगे, या तो वो यूरोप से वैलिडेशन लेना छोड़ देगा और वो एक अपना ही एक एंटिटी बन जाएगा, या फिर अमेरिका विल फॉल आउट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। या छोड़ थर्ड दिया है, ऑप्शन हो सकता है वैलिडेशन कि लेना अमेरिका छोड़ विल दिया, ऑल्सो फॉल। Wait. वैलिडेशन First, या लेना फिर छोड़ थर्ड दिया है। ऑप्शन है कि wait. Okay, Abhay, finish, and then Nina will speak one by one. Go ahead, Abhay. और थर्ड ऑप्शन विल बी कि अमेरिका इटसेल्फ विल आल्सो फॉल एज एन एम्पायर, आल्सो एज अ पॉलिटिकल एंटिटी आल्सो। तो मुझे डाउट है कि अमेरिका विल बी एबल टू डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मुझे उस पे बहुत ज्यादा डाउट है। Nina. I think that America has already given up validation from Europe, because and now Europe is looking for validation in America. It's happening the other way. Say like people like Elon Musk and JD Vance are shaping the discourse in Europe. So then it's happening the other way, right? Yeah, Niner, just to bolster your point again, so maybe I can comment on this as well. So we have an Indian example for this. So the main moral that the main principle which I'm trying to exhibit is that since Europe has lost all its so-called strong power as a whole, the so-called derivative cultures like the American culture, the Americans will be least interested in trying to take validation from that so-called Europe West because it has no strong power at all right now. So one of the example which I have, which struck in my mind right now, was of Hindus and Sikhs. So the Sikhs used to so-called validate themselves by quoting our scriptures and all of those things. But when we started falling as a society, now you see some of the Sikhs trying to decouple themselves from us, saying, "Oh, we are not them. We are not with them. We don't have anything to do with them whatsoever." Given we were the mother culture, yet they are doing this. Another example is that of Greece. How many people do try to seek validation of Greece at all? So the so-called West is trying to ape at so-called Greek heritage, right? But does the West, so-called international community, even try to take any opinions off of Greece? Uh, Absolutely not. So yeah, it supports Nina's points. तो इसमें एक पॉइंट आप के बात पे बोलना चाहूंगा कि सुनो, उनका कल्चर ना ही ग्रेको है ना ही रोमन है, ठीक है? उनका क्रिश्चियन कल्चर है। उनके पास कुछ भी रोमन नहीं है, ना ही उनके पास ग्रीक है कुछ ऐसा। दोनों को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है?
जब रोमन्स जब डिस्ट्रॉय हुए थे तब ये क्रिश्चियंस के हाथ में था रोम, और जिन्होंने तोड़ा है या डिस्ट्रॉय किया है वो भी क्रिश्चियन ही थे। तो बारबेरियन वर्सेस बारबेरियन हो रहा था वहां पे बेसिकली। रोमन का कोई कल्चर नहीं बचा है उसके अंदर, इनके अंदर ये क्रिश्चियनडोम का कल्चर है जो ये अपनी वो किताब से लेके आते हैं, बाइबल से। ठीक है, तो कल्चर इनके पास नहीं है, इन्होंने अमेलगमेशन किया है बहुत सारी चीजों को, कहीं से जो अच्छा लगा या जो इनको सूट किया नैरेटिव इनका वहां से उठा लिया, और अब एप्रोप्रिएशन चल रहा है। इजिप्शियन को भी एप्रोप्रिएट कर लो, मेसोपोटामिया को कर लो एप्रोप्रिएट, और ग्रीक को भी कर लो, रोमन को भी कर लो, पूरा वर्ल्ड को ही एप्रोप्रिएट कर लो तुम। ठीक है, वर्ल्ड कल्चर कर लो। मानता हूँ कि बट माय अब तो क्रिश्चियन कल्चर भी नहीं रहा इनके यहाँ बेसिकली। तो वैसा अब कुछ तो था ही नहीं, पोस्ट क्रिश्चियन कल्चर जैसा एनलाइटनमेंट कुछ नहीं था। era जो हम्म? क्रिश्चियन कल्चर जैसा कुछ नहीं था, अमेलगमेशन था, इन्होंने कॉपी कर दिया हर जगह से। पर ठीक है, हाँ, तो मतलब जो बेसिक कैथोलिक जो रोम से डिक्टेटेड वैल्यूज थे वो भी नहीं रहे, क्योंकि इतने सारे डिविजन हो गए इनके रिलीजन में, सोसाइटी में। फिर एथिज्म आया, तो एनलाइटनमेंट, ये सब मॉडर्निटी की तरफ चले गए, तो बिल्कुल ही अलग पाथ में है ये तो अब। ओरिजिनल क्रिश्चियन कल्चर तो ये फॉलो करते थे, क्या बोलते हैं, जो कोलोनाइजेशन हो रहा था ना वर्ल्ड का, वो ओरिजिनल कल्चर था। उसमें जो हो रहा था ना मैसेकर्स, जेनोसाइड्स, वो ओरिजिनल क्रिश्चियन कल्चर है, हम्म। क्योंकि जहां पे भी नया कुछ इनको दिखता था वहां मर्डर कर देते थे उस जगह जगह का लेने के लिए। तो वो ओरिजिनल क्रिश्चियन कल्चर था। अभी तो पता नहीं क्या ही किसी क्या चीज के सपने देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा इनको खुद को ही। इतनी कंफ्यूज सोसाइटी है ना, इनको पता नहीं चल रहा अप्रोप्रिएट किसको करें। मुझे जैसा लगता है अमेरिका के विषय में कि अमेरिका यूरोपियन नवजागरण का अभिव्यक्ति है। कि पश्चिम में जो यूरोप में जो रेनेसां चली थी, उसी का अभिव्यक्त रूप है अमेरिका, और वही आगे बढ़ा है। तो हो सकता है वो यूरोप से वैलिडेशन लेना छोड़ दे, पर वो अपने आप को उस कल्चर से जोड़ना नहीं छोड़ेगा कि हम वेस्टर्न हैं, हमारे वैल्यूज वेस्टर्न हैं। मुझे उस बात पर संदेह है। ये Okay, now लोग we तो were Dada. What's the next question? हाँ, Oh, sorry, sorry. Yeah, ठीक है, एक बार आगे करो, बोल yes, दे। कंटिन्यू करो। yes. Let me just go through the questions. I think there is one good question. Not a question, but a comment. Let me check. Okay, we have a lot of things coming up very, very sharply. Okay, this is interesting, which is to our topic itself, from Sanatani Doctor. I have heard that diplomats have been postponing tariffs in last time too, discussing it over 3 4 years, with similar happened this time. Okay, so yeah, see, as I mentioned previously as well, that it's a kind of a political posturing to actually put pressure on the other party so that they will give in to your demands. So international relations are based on self-interest. So India will try to maximize its gains with the US in terms of trade, tariffs, military hardware, jobs, H1B visa, and America will have its demand. So it's going to be give and take. Okay, especially on the trade deficit that America has with India and China. So whatever you see in terms of political rhetoric that you see in local American politics and politicians speaking, that is a kind of a front. And in the back end, there will be negotiations happening between diplomats and government officials to actually find a kind of middle ground where they will go through the bureaucratic process, and you will see things moving in and out slowly. So like politics is a very complex thing. Okay, it's politicians say something and they do something 180 degrees different. So yes, that is how politics works in terms of international countries talking to each other. So they will have a lot of high pitched demands, but they will
filter down to something tangible which can be accepted by both the parties. Yeah, anybody has any more comments, or we'll move to the next one? Okay, so I don't see any response, so we'll go for next one. Okay, let me just check. Okay, these are all comments. Hmm. This is okay. Let me check. Okay, I'll take this, but I think there's a lot of speculation on this, so I think this is something which will be happening in the back end, and you will not see an immediate change or tangible change or effect in the policies with regard to Pakistan and China. But over a long term, over a 4-year period, there might be some significant changes here and there, but not too much. See, in terms of international policy, it does not change overnight unless there is a kind of a hard push from both sides. So America, because America is not in our neighborhood, it's a transatlantic country where Europe and America are divided by Atlantic Ocean. So America can take a lot of hard decisions on its Asia Pacific via Quad, but India, because they have it has its neighbors Pakistan, Bangladesh, and China. So you will see significant changes in the back end in terms of policy and few things here and there moving. But overall, you will not see a lot of overt changes in terms of the way we deal with them. But it's I think I will have some security expert or defense person to talk about this. We are not the right person to actually comment on this. We don't have the expertise on that. Yeah, anybody has any comment? मैं ज्यादा नहीं इस पर बोलूंगा, पर बेसिकली ये जो फाइट है पीओके और ये सुपरफिशियल है, इसका जो वापस लेना है, क्योंकि आप न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ ये टसल है, जो कि तभी होगा या जब टेक्नोलॉजिकली ब्रेक थ्रू होगा, जिसमें न्यूक्स आप अनयूजेबल कर दो, ठीक है ना, उसका कोई यूज आप खत्म कर दो एक तरह से, तभी होगा। बाकी मुझे कोई नहीं लगता पॉइंट कि कुछ इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। पाकिस्तान से रोग नेशन का आप कुछ कर नहीं सकते। उनमें स्टुपिडिटी जो होती है ना, वो हावी होती है उनमें, तो आप स्टुपिड लोगों से बच के रहना चाहिए। Got it. Yeah. Anybody has any more comments, or we'll move to the next very important point, question raised by something doctor. USA is now मुझे going to be, yeah, Abhay, go ahead. मुझे वो पीओके पे एक बात पूछनी है सबसे। आप पीओके लेके उसका करेंगे क्या? आपको चाहिए पीओके, आप उसका करेंगे क्या? उसका पॉपुलेशन का आप क्या करेंगे? ये मुझे बता दो। उनको आप नियंत्रित कैसे करेंगे? फिर तो पीओके लेने की बात करो। I think maybe you all can comment on this. So, isn't it a profitable thing for us to at least aspire for capturing Gilgit-Baltistan? Anyone, please comment on this. Not talking about Pakistan occupied Jammu and all those areas. I'm talking about Gilgit-Baltistan specifically. So from what I understand is that if we were to take Gilgit-Baltistan, then we could stop the trade between China and Pakistan, and at the same time have an air route to reach Central Asia. The rest of the advantages, I don't think there are many, because they don't have any natural resources also. It's not a rich area, and the people are also radicalized. इस पे Okay. मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। फिजिकली इंटरवीन करने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। आप जो भी मतलब ट्रेड है या जो भी इश्यू है ना, उसको आपसे रीड बना दो,
ठीक है ना, वो चीज वायबल ही ना हो, वो आप ऐसा एक्शन लो या ऐसे पॉलिसी अपनाओ कि ट्रेड जैसे अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है, पाकिस्तान पॉसिबल नहीं है, चाइना पाकिस्तान का कोई भी ट्रेड, तो आप ऐसा ऑब्सोलीट बना दो ना, आपको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो है फिजिकल इंटरवेंशन जो है ना, दूसरी जगह मैं बोलूंगा कि आप करना चाहिए, पर यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि सेम इशू है कि आप स्टूपिड लोगों से डील नहीं करना चाहते, ठीक है ना। कुछ भी कर सकते हैं, एक स्मार्ट आदमी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, स्टूपिड को कुछ कभी उसका हाँ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती उसके पास में। Okay. Any more comments? We'll move to the next one. Okay. That's interesting and actually that's relevant to our discussion. Yeah. Anybody want to speak? No, please continue to the Okay. next question. Okay. So the next question is, US State is now gonna be under State Department. So why are we so optimistic about its non-interference in our subcontinent? Very interesting. Okay. Is it going to be? I'm not exactly sure. I need to check whether it is going to be under State Department or what. Uh, I'm not exactly sure on that part. Anyway, but if it's there, then Neener and others can actually just say like, correct, in that case, I'll just Google it but yeah, please to Google see it. what. If you can add to this question that Mm-hmm. since Republicans are in power, will they give more free hand to church to conduct their activities in developing countries, including India? See, a significant supporter base of Republican Party and Trump comes from the church lobby. Okay, that's a established fact. Okay, and they played a very important role in Trump winning the election. Okay, so that is something which is a very important point. See, from my perspective, it see you cannot. You have a entrenched established mechanism with funding and with political leverage because they have played a very important role. So you will, okay, yeah, let me just check. Mm, okay, so Rishi has officials in Trump's officials in President Trump's administration are expected to announce the move in the coming days. Discussions about the extent of the funding reduction remain fluid. On Monday, Trump made a Secretary of State Marco Rubio, the acting administration of U.S. states, said that, and Rubio himself soon confirmed it to be reporters traveling with him in Salvador. ABC News earlier reported his status as chief, and Rubio said that later congressional leaders that he has authorized Peter Marco. Okay, see, now there are two parts to it. First of all, you are not going to actually completely cut off the monster's head. Okay, what will happen is that they had a free reign in terms of doing whatever they wanted to do with Doge and Trump administration playing an active role. There is a difference in terms of two Biden terms that you had, correct, where President Biden was a kind of a what do you say, a non-functioning president. The whole admin was run from the back end by the entrenched Democratic nominees. They were running it. So with Trump being the firm policy, firm political views, you will see reduced activities which actually hurt India in long run in terms of church activities in India. So there will be a significant improvement, but it will not go away because that's a reality that we have to work with.
And yes, and Nina has confirmed that USAID is being merged with State Department. See, and one more Right. thing. So So now, yeah, go I'll ahead, just Nina. confirm this. So USAID is being merged into State Department, and the official stance is that all this humanitarian aid and all, it will continue in various forms, but they will not take it as soft power. They will actually admit it upfront, and they will use it as hard power in bargaining and all that. And yes, and that's how actually countries function. So that's a natural way of doing Yes. things. So there is no permanent enemy, friend, partner. It will change over time because your Yeah. interests So align with this them. will You no will do. longer be secretive like it was earlier, basically. So, Nina, will this I be think like transparent? Like will they report it every year? Its expenditure as to where they are sending the money and for what purpose and so on. So that you cannot say with certainty, but a lot of like the targets of budget cuts are basically ideological. For example, they're cutting down on DEI specifically in many countries, and some they have continued, say like to Israel or now they're continuing it. Okay. ये लोग जो uh, आई डोंट थिंक ये लोग बताएंगे क्या हो रहा था, मतलब कहाँ फंडिंग जाएगी। पर जैसे अभी क्या हो रहा है कि कंट्री वाइज नाम पता चल रहा है कि वहां ये लोग ने किया है, तो ये क्या करेंगे, लाइन को ब्लर करने के लिए ये रीजन वाइज कर देंगे। जैसे इंडियन ओशन रीजन कर देंगे तो वहां आपने डोनेट किया, अब किस कंट्री में गए स्पेसिफिकली पता नहीं चल सकता। तो ऐसे कुछ ना कुछ करके ब्लर कर देंगे लाइंस को कि आप ट्रेस ना कर सको मनी को, पर काम वही होने वाला है बेसिकली। मुझे Okay. लगता है कि यूएसएड का जो हिसाब है वो ये है कि यूएसएड उन्होंने पहले चालू किया था दूसरे दूसरे की फटे में टांग अड़ाने के लिए, पर उल्टा ही हो गया, इन पर उल्टा पड़ गया कि यूएसएड इन्हीं के देश में वोकिज्म ला रहा था। तो अब इन्होंने सोचा कि यूएसएड को अब नियंत्रित करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई कुछ अलग ढंग से करते हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट में डाल दो और जिसमें अभी अमेरिका का हित है उस हिसाब से हम फंडिंग करेंगे दूसरे देशों में, वो जैसा ट्रम्प सोच रहे हैं अमेरिका Abhay, का जिसमें हित है, मुझे वही लग रहा है। hmm. Abhay, can you explain your previous assertion about USAID in turn was like spreading wokeism in their own nation itself? आई थिंक आई थिंक वो डीएआई वगैरह का फंडिंग शायद यूएसएड से था। हाँ था। और तो वही यूएसए को भारी पड़ रहा था, तो वो वो उल्टा डायरेक्टली नहीं पड़ कर गया रहे थे, यूएसए। वो डायरेक्टली एनजीओ नहीं कर रहे और थे, पर वो कॉर्पोरेशंस को कर रहे थे। और वो एनजीओज ने डीआई लाने की चेष्टा की, आई गेस। तो उसके नहीं नहीं, कारण यूएसए। समझो वो क्या करते ओके। थे, मान लो कि आप मालदीव्स में किसी एक आदमी को भेज दो, ठीक है, या वहां एनजीओ अपने खोल दो, वो क्या करेंगे, एनजीओ को पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो पैसा कंट्री के बाहर गया है ना, मतलब कंट्री के अंदर नहीं गया, तो गवर्नमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करते थे ये लोग, वो एनजीओ क्या करता था, वो यूएस में आता था, वो एक यूएस में एनजीओ होता था, वो उसको फंड करता था, ठीक है, एनजीओ दूसरे एनजीओ को फंड करता था। फिर वो एनजीओ है, वो तीसरे या चौथे एनजीओ को फंड करता था स्टेट वाइज, जिस स्टेट में जहां या जो भी डिपार्टमेंट में करना है। फिर वो एनजीओ डिपार्टमेंट को फंड करते थे, या फिर जो पीपल पोजीशन में थे ना पावर के, उनको फंड करते थे ये, ठीक है। ये डायरेक्टली कभी ये फंड नहीं करते थे कोई चीज को। अच्छा, मतलब मैं वही बोल रहा था कि यूएसए इन्हीं को भारी पड़ रहा था, तो इनको लगा कि नहीं ये बंद करो, या ये इस पर हम अलग से अपना कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है वही हुआ है, पर वो लोग फंडिंग करना नहीं छोड़ेंगे, दूसरे के देश में टांग अड़ाना नहीं छोड़ेंगे, मुझे तो नहीं लगता। अब ऐसा ही होता है जो तुम मतलब क्या बोल चांद। Okay. So what is going to happen is that
the policy, the policy the Trump administration will actually implement, the money will go into that. So with now Trump administration aligning its policy with India and other Asian countries, you will see money spent the way they want it. So there will be less subversive activities happening through US aid. Whatever happened, it will get reduced because uh, the primary objective of Trump administration is to actually reduce US trade deficit and also bolster US economy. In that case, they need India as one of its biggest trading partners. So the kind of activities which took place in previous decades, they will get reduced significantly, but they will not diminish. Yes. Okay. I don't म- think we have. Yeah. मुझे Hmm. हाँ, मुझे Go जो ahead. लग रहा है वो यही है कि आ, आप ये इंडियंस को ये सोचकर कतई नहीं चलना चाहिए कि ट्रम्प ऐसा सिस्टम बैठा के जाएगा जो जो इंडिया के लिए लेस एंटी होगा पहले से। मुझे लगता है भले ही हो, पर इंडियंस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंडियंस को सोचना चाहिए कि ट्रम्प जो नया सिस्टम बनाएगा वो भी इतना ही एंटी इंडिया रहेगा जैसे पहले था, पर ये जो समय लेगा वो बदलाव करने में, वो उसमें एक अवसर है भारत के लिए या समय है कि अपने आप अपना जो प्रॉब्लम्स है वो फिक्स कर ले और अपने आप को बचाने के तरकीबें निकाल ले। तो वो यदि भारत कर सकता है तो वो वहीं पे भारत की जीत है। मुझे मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प ऐसा कोई व्यवस्था में परिवर्तन करेगा जिससे वो पूरा भारत के पक्ष में हो जाए। वैसा सोच के चलना ही नहीं चाहिए, मेरा मतलब। Yes. Okay. So we'll take next one. This is an important point raised by Sanatan Shashwat. Uh, Now poking that now, will it be global right type things like Musk interfering in Brazil or Germany? Okay. Yeah. So, okay. See, the thing is, as in one of the talk shows mentioned by AIM, that we as Indians and Indian state in general, okay. So now we are the fourth or fifth biggest economy, okay, technically, uh, globally, okay. So we have to get rid of this mental blockage that even let's say tomorrow any other country has some hostile policy towards us. It can be some billionaire businessman, some country funding it. We as Indians, as an Indian government and an establishment, needs to have that capacity and the courage. Okay, if that happens, we can deal with it. We have to get out of that mindset that something will happen and we can't do anything about it. Now I think Bharat has the economic power and a significant military power, okay, and also geopolitical power in terms of a soft power that India projects, especially in Asia and Africa, that actually we can deal with them. See, in international relations, nothing is static. Today, somebody is your friend, tomorrow, they will become enemy. And we should have the capacity and the conviction to deal with them when it comes. That's how countries function. Okay, it's not a static the way we and you perceive it. Yes. Okay. So I think we have taken all the important messages and questions which were there. Rest are something that we can ignore as of now. So okay. So we will finish this debate in about next 6 minutes. So a minute to every one of you, one by one, starting with Nina. Yes. Do you have any question or anything you're taking?
No. So I think we have taken all the comments and questions which were relevant to our discussion. So we will finish the debate in about 10 minutes. So you have 2 minutes of each of you to actually your last comments, and then we will end this discussion. Okay, so I think that this will be among like the best opportunities for India as a country to change the many systems and policies that it has, and also like learn from the mistakes and the uh, right things that the West are doing, and we can utilize this time period quite effectively then, because we've never had foreign governments who are you can say impartial towards us. What do you say? Right, yeah. So Okay. most of the foreign governments they were always trying to you can say arm twist us. They are not right now. They're not as much concerned. They have a lot of their internal matters going on. So we can. This is quite an opportunistic time for us. Yeah. Okay. We got your point. So now, Abhay. Sorry, not Abhay. Shekhar. मेरा मानना है कि ये जो टाइम है 4 साल का, अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो हम अपनी जो इंटरेस्ट है वो जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है ना, वो अमेरिकन प्रेज़ेंस है ना, वो कम करेगा वर्ल्ड के अंदर, ठीक है? स्पेसिफिकली अफ्रीका में, क्योंकि लॉन्ग टर्म छोड़ के अगर आप शॉर्ट टर्म देखो तो वहाँ कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है? और लॉन्ग टर्म में वो कम्पीट करेगा चाइना के साथ में, ठीक है? तो अगर वो ओशन कंट्रोल करे तो उसका काम हो जाता है, उसको कंट्रीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा उसका साइज़। अगर पूरी तरह से ना भी जाए तो कुछ हद तक वो कंट्रोल कम करेगा। वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को या तो इंडिया फ़िल करेगा, या रशिया फ़िल करेगा, या चाइना फ़िल करेगा। और सबसे पास में है वो इंडिया है, ठीक है? रशिया के कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना ट्रांसकॉन्टिनेंटल काम कर सके। चाइना कर सकता है पर वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको यूएस कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। पर इंडिया जो होगा, वो ज़्यादा नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास फ्री रेन होगी, वो क्या करना चाहे इस रीजन में, ठीक है? तो यहाँ पे वो अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एडवांस कर सकता है। दूसरा सेम चीज़ वो साउथ अमेरिका में कर सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है इंडिया को आई थिंक फेवरेबल मानता है, एलाई नहीं मानता पर फेवरेबल कंट्री मानता है। तो वो अगर इंडिया कुछ भी इन्वेस्टमेंट या स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करेगा साउथ अमेरिका में, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना? वो मतलब ज़्यादा आपके अगेंस्ट एक्शंस नहीं लेगा जब तक कि अ, आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस उसके अंदर नहीं बनाते। हल्की-फुल्की प्रेज़ेंस होगी, थोड़ा बहुत इधर-उधर ट्वीक करने की कोशिश करोगे आप गवर्नमेंट्स को, तो करने देंगे वो। पर जब तक आप अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ रिड्यूस नहीं करोगे, तो तब तक आपको वो छेड़ते नहीं है। आप उसके बाद में ईस्ट एशिया जो है यहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे इंडिया का पास कल्चरल पावर है, कुछ करना चाहे तो। वैसे तो सारे इडियट्स ही हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट में, पर अगर करना चाहे वो तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है? सबसे आसान करना जो है तीनों जगह में, वो साउथ ईस्ट एशिया में करना है, ठीक है? आपके पास फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, अगर आप ढंग से इस्तेमाल करो तो, ठीक है? तो यही है। Okay. Rishi, go ahead. Nothing much to say right now. Both Nainer and Shekhar have actually told many of the things which I was thinking about, but at least I will say on this issue that in the coming years that will be there, we should not be in the whole syndrome of Wonderland syndrome, uh, thinking that everything will go merry and happy. There will be a lot of problems. Many of the geopolitical experts are predicting those things, and on the issue of poking, yes, there is a great amount of literature being propped up right now, especially against us in India, for in vis-a-vis Christian persecution and so on and so forth. So uh,
maybe someday Elon Musk will tweet out something against us that, oh, India, you are persecuting Christians and so forth, so on and so forth. So we should not be dreaming about everything will go gaga. So we should be vigilant. I was trying to say just that. Just that only. Yeah. Thank you, Rishi. And the last word goes to Abhay. सो या सो जैसा कि आज मेरा नाम है डॉज लाओ भाई, तो उस पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि क्योंकि हमारा एक एक प्रॉब्लम है कि हम अमेरिका को देख के कॉपी करते हैं कि अमेरिका में डोज लाया है तो यहाँ भी डोज लाओ, पर यहाँ का डोज थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे कई जगहों में आपको सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक चाहिए, जैसे पुलिस में, तो यहाँ तो वहां पर आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ का डोज ये नहीं होगा कि आप सीधा निकाल दें कर्मचारियों को। पहले तो आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि वो अपना काम कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। वो सारी बातें आपको करनी पड़ेगी। बहुत लोग समझ रहे हैं कि ट्रम्प आ गया तो अपने बल्ले ही बल्ले है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये अपने पास अवसर है अपने आप को सुधारने का, अपनी जो भी व्यवस्थाओं में कुछ भी कमी है, क्योंकि अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा अपने फंडिंग के माध्यम से, तो हम बहुत सारे रिफॉर्म्स कर सकते हैं अभी। तो ये समय बहुत अच्छे से प्रयोग करना है। आप नहीं करेंगे तो 4 साल बाद आपके पास अवसर नहीं बचेगा। वही सबसे बड़ी आवश्यकता है मेरे विचार। बिल्कुल. So the finishing comments from my side, the way things are shaping up, okay, the way things are shaping up, we are going to see a different kind of geopolitics, a different kind of military relationships, and a different kind. I think, in my opinion, we are going to see a different kind of Indian establishment dealing with the international community, including US, China, and Europe. And there are two fundamental reasons behind this. One is the improvements in India's military posture in terms of technology, in terms of capability, and most importantly on that is the economic engine of the next century is going to be India, China, and basically the Asia Pacific region is going to drive the economy. So in that context, we will see a very important role played by India militarily, economy, and the geopolitical advantage that will gain by the establishment from this perspective. So a lot of people are skeptical about it, okay, but whatever I understood by reading a lot of books and other things is that there is going to be a kind of seismic shift the way the Indian government operates because of various factors, externally and internally, the way it will function. Few of them would be done uh, by their own choice. Few of them reforms, including economic reforms, including labor reforms, including changes in the how the bureaucracy functions, will happen because that is something is going to make sure that they're going to win elections. Without financial, bureaucratic, and labor reforms, the economy will not function the way it is because the international scenario is going to change drastically. So you will see a lot of things happening, but we have to wait and watch. It's going to be like a long haul of 2 to 4 years, and you will see a lot of things happening in terms of reforms will took place 2026 onwards. You will see a lot of changes happening, but they will happen in the back end. You will see in the headlines. So that's it from my end. Okay, and yeah, एक Abhay. एक पॉइंट ऐड कर दूं, जजों की संख्या
बढ़ानी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये भी ऐड कर लीजिए जो मैंने कहा उसमें भी डोज। Yes, yeah. So see, there is already a doge happening in Indian establishment, Indian bureaucracy, Indian administration, silently over the years, which doesn't get the headlines. But now, with the external factors kicking in to make sure that this will be even faster paced than what we have seen in the last 10 years of Modi government. Okay, so we will end this program today. Thank you, Didi. Thank you, everyone, for joining and giving your time, comments, suggestions. Thank you for people who have joined the chat and shared their questions and comments. We will have these kind of discussions happening on the weekends. We'll try to have at least 2 of them in a month so that people can come and voice their opinions, a common man's opinion. Okay, and we will also try to get experts on this field to talk about it, to give us more insights into how it functions. So thank you, everybody. And last, I wanted to share something. I think this is the book that we're going to read in our membership streams. So this is a very interesting book on geography, how geography plays a very important role in terms of economy, politics. So the book's name is The Power of Geography, the maps that reveal the power of our world. So very interesting book. I got it at a very good discount. So this I'm going to read, and also I'm going to read one more book that's on a normal stream, that would be Being Hindu. So this has a very interesting chapter on Narendra Modi, okay, our PM. So, and this is written by Dr. Shomo De. He's a renowned historian who has written some critically acclaimed books, academically very rigorous. So these 2 books we're going to read. So this will be a good addition to what we are talking about in terms of policy, in terms of how the leadership actually thinks about it, how they are thinking about the Indian culture, traditions, politics, and how it's evolved over time. So I will request everybody to subscribe to our channel, subscribe, and also share our content to your friends and family so that we can get more people to come and discuss. So thank you, everybody, for coming. We'll see you next time tomorrow on our book reading session. Jai Yes. Shri Ram. धन्यवाद दादा। Jai Shri Ram. Vande Mataram.